Sure. Good morning to all. A warm welcome to our Honorable Director. तिकडेच गेलं. Okay. A warm welcome to our Honorable Director, Professor Dr. Satish Ubade, our esteemed guest of honor, Ms. Sonali Joshi, distinguished faculty members, and the student of Matrix. Dear students, Matrix is committed to enhancing the management competencies of MBA graduates by imparting contemporary knowledge and focusing on the latest advancement in the field of management. In alignment with this vision, our director, Professor Dr. Satish Ubade, has initiated the 4-dimension lecture series, a distinguished platform that brings together eminent experts from academia and industry to share their insight, thereby enriching student learning and employability. Today, it is my great honor and privilege to introduce a personality who has inspired many students and professionals through her knowledge, academic excellence, and dedication towards teaching and research. I invite Ms. Sonali Joshi. She is a distinguished academician, researcher, and HR professional with rich experience in academic as well as the corporate sectors. Currently, she is serving as assistant professor at Trinity Institute of Management and Research, Pune, where she teaches subjects as human resource management, strategic HRM, legal aspects of business, training and development, communication skills, personality development, and leadership. She is presently pursuing her PhD from Savitribai Phule Pune University and holds an MBA in Human Resource Management with distinction from Pune University, along with a postgraduate diploma in HR Management from Symbiosis Pune. Her strong academic foundation has include a master degree in English, B.Ed and B.Com, reflecting her diverse educational background. Apart from teaching and research, she plays a vital role in institutional development. She serves as IQAC and NAC coordinator, actively contributing to quality assurance, mentoring students, and fostering academic excellence. She has also been instrumental in organizing HR conclave, panel discussion, and various student development activities. Before joining academia, Ms. Sonali Joshi gained valuable corporate experience as a senior manager HR at Riva Logic Technological Private Limited, where she was involved in talent acquisition, training, and HR strategy implementation. Her blend of corporate and academic experience provides students with both theoretical knowledge and practical insight into world of management. I'm sure today's session will be full of learning, motivation, and valuable insights for all of us. So without taking much time, let us welcome an inspiring academician and experienced HR professionals and a wonderful mentor. Please join me in warmly welcoming Ms. Sonali Joshi. Thank you so very much, Aniket sir. अजीब सा लग रहा है बिकॉज बहुत लोग हैं आज इस पैनल में उबाले सर यू एंड आई कैन नॉट टेक डॉक्टर प्रवीण थोराट सर's name because he has been my teacher, and today being invited by Matrix for this guest session for this 4th dimension series session has been an honor and a privilege. And of all that, jitne bhi yahan hai, first definitely I'm going to keep the session bilingual in Hindi and in English.
and all the students who are there. Let me also tell that Aniket sir and I, we share a very common passion, and that is for food. सो हमारा धर्म कर्म मोस्टली हफ्ते का खाने पे जरूर बेस्ड रहता है एंड आई थिंक somewhere or the other I also feel that what we are going to be covering today is a lot about how colleagues can come together, form a sort of a friendship and perform to their best just because they keep pushing each other. And good morning to you, sir. Thorat sir has just written onto the chat group. Yeah, so with your permission and going forward, I would like to share my screen. Ma'am, I Yes, before I invite all students to turn on their cameras as we will be taking a group photograph. right. I I invite all students to turn their cameras on. Thank you, Rohit sir. Once again, a warm welcome to Miss Sonali Joshi. Ma'am, over to you for the session. Thank you, sir. Thank you. Sharing my screen now, everyone. Just give me a minute. Why is it not reflecting? Just a minute, please. I have certain connectivity issues today. That's why it's reflecting out here right now. Just give me a minute. So I'm right here with you, but just give me a minute. Yes, ma'am. That's a nice song playing. All right, please tell me that you can see my screen. Not yet. Yes, ma'am. Okay, and you can hear me clearly? Yes, okay. So, Yes, ma'am. all right. So the topic that I have been given is Indian Knowledge System Principles and Management Fundamentals. Ma'am, your voice is not coming. Sonali ma'am, you are not audible. Huh?
Giri sir, please talk to Sonali Joshi ma'am. आई सॉरी अबाउट दैट. मैं बोलती रह गई लेकिन इंटरनेट wasn't there, so very sorry. Well, I'm just going to be sharing my screen again. What was the last thing you heard? Ma'am, introduction. Oh, okay. All right. So मैंने मेरा वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी जो था वो भी नहीं सुना किसी ने. No, ma'am. Okay, no worries. Let me just again, I would
definitely like to thank the founder secretary, Dr. Mrs. Shilpa Kulkarni ma'am, because she's a dynamic force who is heading the Matrix School of Management Studies. Director Sir, Dr. Satish Ezubale Sir, who believes in delivering quality management education with excellence and values as the guiding principles. And definitely my friend Aniket Giri Sir, who has connected with me and given me this opportunity to share my thoughts and experiences on the given topic. Now, management fundamentals, like I was saying earlier, when we realize about our own lives, अगर आप कॉलेज के बाहर निकलो और एकदम अपने घर में बैठे हो कहीं भी, if you are even with your group of friends, you would just realize कि ये जो fundamentals है ना, या ये जो management है, ये रोज के रोज हम लोग right from 8 o'clock in the morning or whenever you wake up till the time you sleep, you apply them in your life. लेकिन एक जब हमारा एक सब्जेक्ट आ जाता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो पता नहीं क्यों हमें एक इससे एक फियर ऑफ द अननोन हो जाता है. मेरा आज जो यहाँ एक मुद्दा है वो यही है that don't get scared of all when the words like Indian knowledge system comes or the principles comes, because today I am going to try my best कि जो भी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो हम एक अपनी लाइफ अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेकर we'll go ahead with it. Now, going further on that, the first term that we have to understand is a manager. At home, it is mother, father. In a group of friends, it may be you. Why? Because you are the one, the chain, who will communicate messages through. Even in a company, a manager would be the person, the middleman or the communicator, जो अलग अलग tiers को एक organization में जोड़ के रखते हैं, information disseminate करते हैं. वो नए एम्प्लॉइज को स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यूज करते हैं, बजट्स बनाते हैं एंड डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजंस भी देते हैं. रोल बहुत बड़ा है, दायरा उससे भी बड़ा है. द पॉइंट दैट वी हैव टू मेक इज दैट व्हेन वी आर इन दैट रोल, वी आर ट्रूथफुल टू आवर वर्क. मैनेजिंग, it refers to the management process, that is the systematic coordination of organizational resources. Organizational resources सबसे पहला the people, time, money, material. अगर आप अपने घर में भी देखो तो भी यही होता है. बजट रहेगा, समय में सब कुछ करना है, पैसा जितना आया है उतने में ही हमने अपना पूरा महीना चलाना है, और जितने लोग हैं हर रोज एक ही कोशिश रहती है that the family should stay happy together. The key aspects of managing are decision making, problem solving, guiding people, and balancing resources. What is a workplace? A workplace is the place of employment where the people perform tasks. You are given a task. You are the master of your task. अब एज अ मास्टर या तो आपको सारी स्किल्स पता है उस टास्क के, या आप सीख रहे हो और उसको आप आगे प्रैक्टिस कर रहे. आजकल co-working spaces are very important. They also are considered as workplaces. Absolutely, yes. A workplace can even be mobile. It can be even remote. There's so many options. So when you are working in a given space, that may be in the office, that may be on a chair somewhere in the office, like Google Workspaces or Google offices are famous, that their employees can work anywhere they want as long as they're performing and giving the result. Then comes the organization, the biggest, the umbrella of all. जो हम कर रहे हैं, parents, grandparents, extended family, joint family, siblings, you, everything comes under one umbrella. That umbrella is called home. That umbrella is called the family. The organization is that umbrella wherein all the resources, time, material, people at different levels, they all come together. They are the collection of individuals who will come together for one common objective or one common goal, and that is the organization's success. An organization may be a company, an institute, an association, or a government body, any of these. Now, people or persons who start the organizations are normally called the founders. For example, Matrix School of Management Studies, and your founder, ma'am, is Shilpa ma'am. And today, it is one of the most prominent management schools that we have in Pune. Now we come to the universality of management. I know the topic is principles of Indian knowledge systems and management fundamentals, but before that, you need to understand these basic concepts.
What is the universality of management? यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब होता है? सन राइजेस इन द ईस्ट, ट्रूथ या फैक्ट? वी स्टिल डोंट नो एन आंसर, बट हाँ हमें ये पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट ही होता है, वो वैसे नहीं होगा। ये रोजमर्रा का एक सत्य है जो हम जीते हैं, ये एक फैक्ट भी है, क्योंकि इट हैपेंस ऑन एवरी डे बेसिस, नथिंग चेंजेस इनटू दैट। Similarly, the management principles are completely universal. They apply to all types of organizations, big, small. Just give me a moment, please. Just a moment. I'm sorry, there was a lot of noise coming from outside. So, the management principles would be applicable to the all levels of management. Board of directors cannot have a different rule than what is being floated for the whole of the organization. Be it the top, be it the middle, be it the first line managers, be it the new employees or the executive company. So, the principles remain universal for all areas, for all the disciplines that may be followed in the company, and it emphasizes that management is a transferable skill. अगर आज मैं एक मैनेजर की पोजीशन पर आई हूं, तो जाहिर है मेरे पास एक टीम है जो मुझे दी जाएगी आगे ट्रेन करने के लिए। मैं उनको तभी ट्रेन कर सकती हूँ जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ी हूं। आई हैव ग्रोन विद द ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव लर्न द वेज एंड द सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही नॉलेज में आगे इम्पार्ट कर सकती हूँ, वही स्किल्स में आगे इम्पार्ट कर सकती हूँ। सो मैनेजमेंट स्किल जो मैंने सीखा, वो जो मैं एक न्यू ज्वाइनी आया है या जो मेरा बडी है, मैं अगर उसको भी वही सिखा रही हूँ, दैट मीन्स मैं उस इंसान को अपनी कंपनी के सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड डिसिप्लिन में उसको मैं ढालने की मदद कर रही हूं। Now we come to the Indian knowledge system principles and management fundamentals. Now what is Indian knowledge system? क्या करता है ये? It offers deep philosophical and practical insights that can enrich management fundamentals. There was a lot of discussion when this subject was being offered, and I think Thorat sir is there and Giri sir is there. They would resonate with me. A lot of time people gave it a very religious implication that, it is based on certain scriptures or everything. The terminologies may or may not give you that feeling, but I don't think anything to do with the specification of a certain scripture or a religion would be a true statement to make. हर एक चीज जो हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक इट वेरी सिंपल बिफोर आई गो टू द प्रिंसिपल्स। अभी एग्जाम्स खत्म होने हैं, ठीक है, चलो आज किसी का बर्थडे है, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी। कहाँ जाना है, हु वेयर व्हाट हाउ, कितना बजट है, गिफ्ट क्या देना है, कौन कौन आएंगे, कहाँ जाएंगे, खाना क्या ऑर्डर होगा। वेरी सिंपल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोई एक तो बोलेगा बजट इतने ज्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ हम 5 लोग जाएंगे क्योंकि हम 5 लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किसी और को बुलाना है, कैन वी कॉल द सिक्स्थ पर्सन, उसने हमारी मदद की थी। एवरीबडी विल गिव कंसेंसस, एक मत। तो लाइक आई सेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जब अपने अपने आप को फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ स्टूडेंट और रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट निकाल कर देखो, यू विल सी दिस हैपनिंग ऑन एवरी डे बेसिस इन योर लाइफ। इवन अ सिंपल थिंग लाइक चल चाय पीकर आते हैं, ओके, चाय पीकर आते हैं। कॉलेज में 3 कैंटीन्स हैं, कहाँ जाना है, गोल क्या है, उस 15 मिनट का सिर्फ चाय पीकर आनी है। जाना कहाँ है बिकम्स अ डिसीजन। That is what Indian knowledge system does for your personal and your professional life. Many traditional Indian texts and practices, they emphasize these values कि ड्यूटी क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, ये मेरा है, तो हाँ ये मैं अपने साथ लेकर घर जा सकती हूँ। ये इरेजर ऑफिस ने मुझे दिया है, कैन आई से नहीं ये इरेजर मेरा है और मैं इसको घर लेकर जा सकती हूँ? दैट इज स्टीलिंग। Integrating IKS with management principles helps create value-based, sustainable, and human-centric
लीडरशिप। सक्सेशन प्लानिंग, अगर आपने ये नाम सुना है, अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो मिस्टर मुकेश अंबानी एंड व्हाट द वे ही इज डिवाइडेड हिज एम्पायर इन हिज 3 चिल्ड्रन, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। जब आप एक अच्छे एम्प्लॉय बनेंगे और आप एज एन एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ ग्रो होंगे, तो जाहिर है उस कंपनी को आपके अंदर एक पोटेंशियल नजर आता है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दैट यू मे बिकम वन ऑफ द सीईओज. If you know what example I'm taking example of Mr. Sundar Pichai, who's today the CEO of Google. The Indian knowledge system principles in management fundamentals. The principle and the relativity. The principle is dharma with ethical alignment or duty. Karma, action and accountability. Nishikarma, that is the selfless work. Panchkosha, that is holistic evaluation. Holistic matlab a 360-degree evaluation, non-biased, vision and well-being. Purushartha, 4 goals of life. Atmanirbharta, self-dependence, self-reliance. Gunatraya, the 3 gunas. Guru Shishya Parampara, mentoring and learning. Lokasangraha, welfare of society. A human is a social animal. ये हम अपनी क्लास 5th 6th 7th पता नहीं कब से ये एक सेंटेंस हर एनवायरमेंटल साइंस में, सिविक्स, सोशल स्टडीज में लिखते रहे हैं, एंड वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट. दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ. You cannot sustain yourself as an individual. For some time you will like your space, but after some time you would like कि आपके जैसे लोग कहाँ हैं, आपका परिवार कहाँ है, प्रोफेशनल परिवार, पर्सनल परिवार. एक मध्यम, one vision, one thought, collective leadership and consensus. Let's begin with dharma. So dharma means duty and ethical responsibility. What is the main principle of this? It says that you need to, as an individual, first balance ethics over profit. मुझे क्या मिलेगा, हमेशा मुझे क्या मिलेगा उसी समय इन कैश नहीं मिलेगा, इन एन इंसेंटिव नहीं मिलेगा. यू माइट हैव टू वेट फॉर इट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एज एन इंडिविजुअल यू गाइड द बिजनेस विद इंटेग्रिटी. सही तो सही, गलत तो गलत. बायस्ड अगर इंसान सही नहीं है लेकिन वो आपका दोस्त है और आप जानते हो कि वो काम ढंग से नहीं करेगा, तब भी आप उसको कंपनी में लेकर आते हो जस्ट बिकॉज यू नीड टू be friends with that person would not be a right thing to do. You are responsible and you are accountable not only for yourself but for your friend as well. So application and management, there are fair policies and recruitment. Today, if you know, and if any one of you have gone for interview processes, you know, आजकल interview processes, they get into around 8 or 9 rounds. Stress interview, one-on-one, आपका group discussion होगा, आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट बहुत होता है. दैट ऑल इज डन जस्ट टू नो व्हाट इज योर बिहेवियर, व्हाट इज योर मेंटल स्टेबिलिटी लेवल. आर यू अ पॉजिटिव ड्रोन पर्सन, आर यू अ नेगेटिव ड्रोन पर्सन, की अगर कुछ भी होगा तो उसमें आपको उसमें सबसे पहले पेसिमिस्टिक व्यू नजर आता है. ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज whatever you do will have a trickling effect or a domino effect. तो जब आप काम करते हैं या जब आप अपनी टीम के साथ हैं, अगर आप टीम के साथ ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, सारी कम्युनिकेशन क्लियर है, प्योर है, बिलीव यू मी, द वर्क विल बी बेटर. सो मेकिंग डिसीजंस फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग. द ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग, हाउ डू यू मेजर दैट? जब हम कहते हैं कि एक एमएनसी में जाना है जहां वर्क कल्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए, how do you know the work of culture of an organization without joining it? Who makes that work culture? Organization is an artificial person. So who makes that, who makes the culture? It is us human beings, the employees, who enter an organization, and then we start defining the things out there. Office gossip अगर ज्यादा strong है, culture weak रहेगा. Then we come to karma in management, or karma in management, action and accountability. कभी किसी ने रिले रेस में पार्ट लिया है?
रिले रेस विथ 4 टीम मेंबर्स। एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है रिले रेस में कि बेटन पकड़ाना है अपने दूसरे पार्टनर को, तीसरे, देन द सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ, एंड यू हैव टू रन अराउंड। वेरी सिंपल. So if it is so simple, then why is it decided who is the winner and who is the loser? What is it dependent upon? It is dependent upon the speed of every team member. किसी कारणवश अगर जो पहला टीम है, जो पहला टीम मेंबर है, जो वो बेटन लेकर भागा है, अगर किसी कारणवश वो 2 सेकंड भी लेट हो गया, तो वो 2 सेकंड दूसरी टीम को, जो दूसरा टीम मेंबर है, उसको वो 2 सेकंड रिकवर करने हैं। वो उतना ही तेज भागता है। लेकिन अगर जहां पहला, दूसरा और तीसरा टीम मेंबर तेज भागे हैं एंड दे हैव a lead of around half a lap, you will always notice that the fourth team member is running, but he is not running the fastest. He is running enough because he knows, because the team performed well, they were accountable for their role at that time, the team will win. दैट इज व्हाट इज एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंदर और बाहर कहते हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उसी को कहते हैं कि हाँ, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आई विल वर्क टुवर्ड्स द बेस्ट ऑफ इट। द एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। किसी को बताना मत, लेकिन यहां ऐसा हो रहा है, तुमने ये जिसको बताया है, चाइनीज विस्पर, तुमने जिसको ये बताया है, किस भरोसे पर बताया है, you are also not even sure. But whatever action you would take at that point of time will have a consequence. If it is a positive thing, आप गर्व से कहते हो, oh yes, I work there. Yes, we have done this. When you take that accountability, you become more confident of your individuality. Application in management, employees own their work. The performance goes higher because you know कहाँ आपने बेटन पकड़ाना है और कितने सेकंड आपको रिकवर उसमें करने हैं। कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क। अक्सर देखा होगा, अभी जब आप लोग कॉलेजेस में भी कोई टीम एक्टिविटी करते हो, सडनली द सेम टीम्स कम टुगेदर। टीम्स डिसइंटीग्रेट नहीं होती, टीम्स में नए मेंबर्स नहीं आते। हम चार, अरे हाँ हाँ, हम चार ही काम करते हैं, अरे आ जाओ लेट्स डू दिस। व्हाई डू यू डिसाइड दैट? बिकॉज ऑन डे वन, जब आप लोगों ने अपना एमबीए शुरू किया था, कोई ऐसी एक्टिविटी हुई थी जब आप लोग इकट्ठे आए एंड देन यू फेल दैट यू आर लाइक माइंडेड, दैट मे बी यू कैन वर्क टुगेदर वेल, सो दैट कैन got transferred into that you work together well. That is why you don't let your team disintegrate. क्योंकि क्या होता है, आप जीतते हो। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती। सो कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क, द क्वालिटी and recognition and career advancement, both of them, when you work well in an organization, the accountability or the circle of karma comes back to you, and your enhancement, upskilling, your career development takes place. निष्काम कर्म, सेल्फलेस वर्क। कर्म की चिंता मत कर, सॉरी, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। ये दोहा भी है, ये हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी सेइंग भी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब एक उम्र के बाद हमें इस चीज का मतलब समझ आता है, परफॉर्म योर ड्यूटीज विथ फोकस एंड डेडिकेशन विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। जब तुम ऐसा करोगे, स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी परफॉर्म करना है। क्रिएटिविटी ज्यादा होगी बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट इनटू योर जोन। अगर एक, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जस्ट मेकिंग अ पोस्टर, इस पोस्टर को हम बेटर कैसे कर सकते हैं? शायद इसमें हमें कहीं और से कोलैबोरेशंस लानी चाहिए, शायद हमें इसका सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, कलर स्कीम, इट्स जस्ट अ पोस्टर। बट योर क्रिएटिविटी इज सो हाई दैट टिल द टाइम आपको आपका परफेक्ट पोस्टर नहीं मिल जाएगा, आप उसको लॉन्च नहीं करेंगे। सस्टेनेबल सक्सेस आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब आप एक क्रिएटिविटी के दौर में रहते हैं, दो तरीके होते हैं काम करने के लिए। आओ, टक टक टक, जो आपको काम मिला है सिर्फ आप वो करोगे। ए बोला है ए, बी सी डी बोला है बी सी डी। आप अपने आप उनको एक नए दायरे से देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। एक वो होता है। एक दूसरा होता है,
Well, A has been given to me. Let me see if I can make it A point A point B, C, D. Some improvement in an already existing concept. ऐसे लोगों को intrapreneurs कहा जाता है, not entrepreneurs, intrapreneurs. Intrapreneurs are the people who within the organization work towards the growth of the organization. You set your goals. You put in your effort, the 100% effort. You will collaborate with your team because you need people. अगर कहीं आपको issue आएगा, आप अपने senior के पास जाओगे. And you will stay committed to your project at that point of time. आप उससे haywire नहीं होगे कि अच्छा ये भी चल रहा है तो दूसरा भी कर लो और तीसरा. No. You will stay committed to your path and you will finally let the results follow. Application in management iska encourages intrinsic motivation, because when I am motivated from within, I don't need anyone to come and tell me, shabash, wo to aayega hi. Reduces stress and overdependence upon the rewards, promotes dedication and ownership, and long term commitments बनती हैं. जो आज LinkedIn के ऊपर हो रहा है, believe you me, अगर थोराट में अगर हम बात करें, the first time I think we met was in 2013. It's been those many years, Brunei. Say something. Okay. And अगर हम बात करें, so in 2013 I think was the first time when we met. And why even after these many years? Because he is my guru. When we started, his classes were open to discussions. He never quietened us down saying that nahi ye nahi ho sakta. So we were a group of students who would follow what he would say, and the results definitely followed. Our performances in the subjects were better. Examples in workplace, you will take initiatives. There would be the quality of work rather than the quantity that you would be looking into. You will be more of a team person, a team player at different levels. अगर आपसे senior level team भी एक काम कर रही है and you think that your input will help out there, you would go and tell them that yes, I can help you here. Let me be there with you. Pride, goodwill, responsibility. ये तीनों चीजें आपके assets हो जाते हैं. So holistic well-being in the organization or Panchakosha, harmony of mind, body, and environment. Everybody is talking about sustainability today. Everybody is talking that ecology is very important. Nature is very important. और इन दोनों को साथ में रखते हुए societal जो हमारी implications हैं या हमारा giving to the society is that is also very important. So what is Panchakosha? Panchakosha are that our body is divided into 5 layers. Those layers are Anandmaya, Pranamaya, Manomaya, the mind layer, and the Sust. The Sust is something that we always need to invigorate. Push yourself. ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अथर्ववेदा में जैसे कहा गया है, may this entire universe be in harmony and balance. Today we are talking about climate change. We are talking about deforestation. And कहीं ना कहीं हम सबको, any generation, be it alpha, be it boomers, be it Gen Z or Y, we all can see that we are not going towards a very promising future where nature is concerned. Resources are already lesser. So what are we doing today? Intentionally, subconsciously, जब आप, for example, आज जब आप shopping जाते हो या आप अपनी मम्मा के साथ जाते हो, you just might notice that your mother has stopped taking, or you yourself has stopped taking plastic bags. आप अपना बैग लेकर जाते हो. क्यों? क्योंकि पॉलिथीन या प्लास्टिक यूज नहीं करना. There is a company in Chennai, a grocery store in Chennai, जो बिल्कुल जिसने प्लास्टिक एंड वुडन एलिमेंट्स बैन किए हुए हैं. उनके पास जार्स है स्टील के, बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट जार्स, ग्लास एंड स्टील, जिसमें उन्होंने अपने ग्रेन्स रखे हुए हैं, ऑल ग्रेन्स. And what they do is, if I want to go and buy from their store, they will not give me any bag, no paper bag, no polythene. मतलब paper bag नहीं दे रहे तो polythene तो बहुत दूर की बात है. I have to carry my containers. And as much I want, I will take in that container. They will weigh that and they will give it to me. कितना रिस्क है ऐसी एक कंपनी के लिए कि भाई ग्रोसरी स्टोर चला रहे लेकिन मैंने ये एक रूल रखना है. As a result, that is being featured in Brute India. That is as an example of CSR or
of sustainability and ecology today in business. Management applications, stress management and work-life balance becomes stronger. Employee well-being today is not only about your career development, it is also about mental well-being. CHRO, Chief Happiness Relationship Officer, is a position in company. And this person has the most stressful job कि जितने employees है company में उनकी employee engagement, उनकी हमने creativity, उनकी हमने stress levels company में कैसे कम करने हैं. So now you have foosball tables, you have PTs, you have a gym, you have what not in the companies today. क्यों कर रही है companies है? उन्होंने कहीं किसी को दिखाना नहीं है. It is for the employees so that you stay good, you stay happy. So wellness initiatives, a lot of companies today, the first session that they have is a yoga twice a week or meditation in the middle of the day. Suddenly the computers will be shut off. The instructor will come and you will be into the meditation zone. Flexible work arrangements, remote, being anywhere. The shifts today, they start from 7 o'clock in the morning till 10 at night. You have to complete your 9 hours at work. Choose your time. Which 9 hours would you like to work? Why has this been done? Because there's also women workforce. Does it mean that the men workforce do not need flexible work arrangements? But you need to have a valid reason. आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं 11 से 11 बजे तक काम करूंगा जाके, वो सही नहीं, वो राइटियस नहीं. तो जब आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड भी करती है, पंचकोशा का वो तत्व है कि अगर कुछ दिया जा रहा है उसको सही तरीके से लो, सही तरीके से इम्बाइब करो और उसकी यूटिलिटी भी बिल्कुल सही होनी चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू पुरुषार्थ, विच इज बैलेंसिंग अर्थ, द मटीरियल प्रॉपर्टी विद धर्म एथिक्स. हम सबको इवन एज किड आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्या दिया गया था कि मेरे राइट शोल्डर पे एंजल बैठता है और मेरे लेफ्ट शोल्डर पे डेविल बैठता है. दोनों रोज मेरे साथ जाते, मैं जहां जाती हूँ. और तुम जब कुछ सही काम करोगे तो एंजल बोलेगा वेरी गुड, और जब तुम गलत काम करोगे तो डेविल तुम्हें बोलेगा करो करो करो. सो एज अ चाइल्ड, सही और गलत तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुमने कहीं से एक टॉफी ले ली, हेलो मार्केट में मम्मा खरीद ली थी. हेलो मैम, डेविल का मतलब क्या है? डेविल का मतलब क्या होता है? शैतान. Is that correct? 1 plus IV 2201? ओके मैम, ओके. Yeah. So, there is one जो तुम्हें हमेशा कुछ गलत करने के लिए एंटाइज करेगा, बट उसको बैलेंस भी आपको ही करना है. सो वेन सो मेनी टाइम्स वेन यू सी, जब कभी किसी ग्रोसरी स्टोर में देखना कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है माँ के साथ, उसने कुछ उठा लिया तो माँ उसको पकड़ के कहती है नो डोंट डू दैट, ये गलत है, या वो लेकर पैसे देगी. उस बच्चे को सिर्फ इतना क्या समझ आया दैट आई वांटेड इट. सो आई वांटेड इट कभी अगर लाइफ में इतनी बढ़ जाए और उसको चेक ना किया जाए समय पे, तो वांट क्या लगता है कि ये मेरा हक है. मटीरियलिस्टिक एंड धर्म, इन दोनों वांट्स को लाइफ की इकट्ठे चलाना एक मुश्किल टास्क हो सकता है. बट द 4 goals ऑफ लाइफ, बैलेंसिंग मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, कितना चाहिए with ethics and righteousness, dharma, to create balanced and sustainable growth. मामा अर्थ जो ये ब्रांड है, इनके एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं? एडवर्टाइजमेंट्स के एंड के ऊपर एक लाइन बोली जाती है, उनकी वो टैग लाइन है. व्हाट इज दैट लाइन? कैन एनीबडी टेल मी? हाँ मैम, मैं यूज करता हूँ मामा अर्थ का फेस वॉश. हम्म. आप फेस वॉश यूज करते हैं? वेरी गुड. हाउ इज द फेस वॉश? गुड. विटामिन सी वाला यूज करता हूँ. ओके. तो क्या कहा जाता है एट द एंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट? देयर इज अ टैग लाइन, मामा अर्थ डस्ट डस्ट डस्ट, और ये पेड़ भी उगाते हैं. क्या मतलब हुआ? और ये पेड़ भी उगाते हैं मतलब फॉर वॉट एवर दैट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग बैक टू द नेचर, इज
कि उन्होंने अपना एक खुद का फॉरेस्टेशन शुरू किया हुआ है. दे आर ग्रोइंग trees every year, they are planting every month, they are planting, they are sustaining the nature. इकोकारी करके एक कंपनी है, पुणे में ही है, छोटी सी है. इट स्टार्टेड ऑफ एज एन एनजीओ. व्हाट डू दे डू? जितने भी ये चिप्स पैकेट वगैरह जो भी इतना वेस्ट में आता है, मटेरियलिस्टिक है ये सारा, जो भी इतना ऐसे वेस्ट में आता है, वो उन सब चिप्स के पैकेट्स को लेकर क्लीन करके, वॉश करके, ड्राई करके, दे मेक बैग्स आउट ऑफ इट एंड देन दे सेल इट एट वेरी नॉमिनल रेट्स. सस्टेनेबिलिटी. कुछ भी करना, हर एक बिजनेस का एक ही मोटो होता है, पैसे कमाना. लेकिन आप जब वो पैसे कमा रहे हो, उसको सही तरीके से कैसे यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो. टुडे मिनिमम 2.5 to 5% is what the companies are supposed to give for CSR. Love and fulfillment, fair practices, material prosperity, sustainability, all of these are a part of your Purushartha or the four goals of life. The organizational example would be when a company implements sustainable business practices that drive profitability while also adhering to ethical standards, ensuring fair treatment to employees and community. Panasonic, they go green. They always have this thing that whatever are their appliances, they would be using minimum consumption of electricity into their appliances. Next, we come to is Atmanirbharta or self-reliance. As Swami Vivekananda had said, arise, awake, and stop not until the goal is reached. Fostering resilience, self-empowerment, and inner strength in leadership is what is required in a very good manager and in a very good team. Inner strength, सही करना है, गलत रास्ते पे जाके काम नहीं करना है. रेजिलियंस, एक फेलियर मिला, गिव अप, नो. चीटी की तरह चढ़ने की कोशिश करते रहो टिल द टाइम यू रीच द पीक ऑफ दैट माउंटेन. लीडरशिप डेवलपमेंट, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकती हूं. उसके लिए मुझे क्या चाहिए? स्किल एनहांसमेंट चाहिए, अपस्किलिंग चाहिए, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, मुझे कुछ ऐसे कोर्सेज करने हैं जिससे मेरी डेवलपमेंट हो सके. Do I have leadership qualities? Yes. Do I lead my team well? Yes. Critical thinking and problem solving, very important. Your innovations and your initiatives that you take, they also become very important. So self-reliance becomes a very important management fundamental principle that you have used in your life. If you're a sports player, you are a team player. You know that जब तक हम एक स्पोर्ट में अगर हम पार्ट ले रहे हैं और अगर हम वो स्पोर्ट जीतने की पूरी कोशिश नहीं करते, वो गेम जीतने की पूरी कोशिश नहीं करते, द टीम इज लुकिंग एट यू. If you are into a business or you are into a startup, you're trying your best to give it your 100% to every single product you are making. क्योंकि जब तक वो आप नहीं करोगे, किसी ने बोला कि उसमें शायद ये रंग अच्छा नहीं लग रहा, you will change that color, you make other combinations. Why? Because you are growing, you are having your innovation and creativity grow you within an organization, as a person, as a startup, as an entrepreneur, everywhere. The next that we come to is Gunatraya or three gunas. Managing employee potential by understanding and balancing the sattva. This is what you had read in your first semester. That is harmony and wisdom. Rajas, action or passion, and tamas, lethargy versus ignorance, to optimize performance. Now, with these three elements, there has to be an ambition or drive to reach somewhere. कहीं तो पहुंचना है, कहां? दो चीजें होती हैं, एंड ये मैं हमेशा अपने फर्स्ट सेशन ऑफ एमबीए में कहती हूं. इफ यू वांट टू जस्ट डू अ जॉब, यू कैन डू इट टुडे. You don't have to be anywhere else. You just have to go and give a interview in the company. तो तुम्हें सिर्फ जॉब मिल जाएगा, फिर वो 8,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सालों के सालों तुम जॉब करोगे. लेकिन अगर करियर बनाना है,
तो आज अगर तुम्हें वो 15,000 का जॉब मिल रहा है लेकिन उसमें एक प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट है, क्योंकि तुम अपने आप को अपस्किल भी कर रहे हो कि आने वाले 6 महीने में ये 15,000 मेरे 30,000 हो जाएंगे, कि अगर मैं सही तरीके से परफॉर्म करूंगा, तो वो करियर डेवलपमेंट है। प्रोडक्टिविटी किसकी? तुम्हारी। इनोवेशन किसकी? तुम्हारी। एक्सेप्टेंस किसकी? टीम की, तुम्हारे सीनियर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की। द एनर्जी दैट यू ब्रिंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, when you go all pepped up to your office and you have new ideas bubbling, and when you say this is what we need to do to boost our sales, complacency and inertia, ठीक है ना, ये मेरी चेयर है, ये मेरा टेबल, बस और कुछ नहीं चाहिए, पंचिंग पंच आउट, मोटिवेशन करना ही नहीं है, like in government jobs. So what comes? This stops working. I will do only as is. ना नया कुछ सीखना है, ना नया कुछ पढ़ना है। तो ऐसा क्या होता है, जो कंपनी भी होगी ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने साथ रख सकती है, हमेशा के लिए नहीं रखेगी। यू आर, फॉर अ कंपनी, यू आर नॉट अ कंपनीज चाइल्ड। द कंपनी इज पेइंग यू टू कीप यू for some result, some return on investment. A company offers wellness programs for mindfulness, sattva, incentives, and celebrates achievements, rajas, and supports underperforming staff with training and guidance. In spite of doing all this, if my employee will not respond, I will not have a choice but to let the employee go. Guru Shishya Parampara, mentorship, sorry. Leadership. You have mentors, all of you do have mentors. How many times have you just gone to the mentor and said कि सर चलो चाय पिलाने चलो, सर आपसे बात करनी है? I am fortunate that ever since I came into academics, I have had a beautiful guru shishya relationship, or today I call it as a facilitator or a friend relationship with 3 such students. One of them would wait after the college would get over, because he knew college timings में उतना time नहीं मिलता था, and he would say, I just need half an hour of yours. And we would actually sit and chat if he had a personal issue going on, there was a business issue coming up, communication wasn't strong. How many times we do this? But this is our parampara. This is our tradition. In every phase of life, this is our tradition. The first poem जो हम लोगों ने सीखी है as a kid, कौन सी थी? पोएम पता ना? कौन सी पोएम सीखी है हम सब ने? जॉनी जॉनी एस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। किसने सिखाई? माँ ने, घर में बड़ों ने। वहां से ही हमने वो पोएम वापस स्कूल में सीखी। आज हम दूसरी चीजें सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूअर टेक्नोलॉजी ऑन फोन्स, और यही टेक्नोलॉजी अब हम अपने पेरेंट्स को सिखा रहे हैं। परंपरा है, गुरु और शिष्य हमेशा रहेंगे, ओनली द फेसेस चेंज। The knowledge transfer at every level will happen in your life. How do you imbibe it? How are you as a mentor? How are you as a mentee? That will decide your holistic development. Learning and growing together, जब तक आपकी लाइफ का एक ही प्रिंसिपल रहेगा, आप हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ते रहोगे। That is the main reason many of the academicians choose academics, because that is what we learn every single time when we are with you, the younger generation. Even when ChatGPT was launched, it was after 6 months that I, for the first time, even read about what ChatGPT was. It was my students, 2 of the girls, and they came to me one day and they said, why haven't you still looked at ChatGPT? I said, well, because I don't want it to get into the AI mode of teaching. And Isha was her name. She says to me, you're wrong. If you will use it, you will not disseminate your knowledge. आप सिर्फ अपना skill थोड़ा strong कर लोगे. It was that moment, and she was my mentee. At that moment, she became my guru. So a senior manager, how he coaches and guides and develops the leadership skill for a junior manager is all that
talks about Guru Shishya Parampara in organizations, how you help your siblings, your chota bhai, behan, your cousins to choose career paths or to help them in their subjects, again, is a part of Guru Shishya ethos. Lokasangraha, welfare of society, collective welfare and social harmony. The best thing I like about my country, India, is the number of festivals we have. The food that is served throughout the festivals, everywhere, open to everyone. The colorful decorations. And the last but not the least, everybody smiling and enjoying everything. क्रिसमस में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने रेड कैप ना पहनी हो या एंजॉय ना कर रहे हो, हमारा फेस्टिवल हो ना हो. The philosophy or the Indian philosophy says that emphasize on the collective welfare and social harmony, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल्स पॉजिटिवली अंदर जाएंगे और परफॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी की तरफ. कैसे? थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, sustainable practices. Solar energy has become a huge thing, let alone companies. Even the houses nowadays have started using solar panels to conserve energy. And inclusive business practices. Diversity, equity, inclusion is a huge thing today. I don't know how many of you are aware of it. Today, to make a comment or to have a passive sort of a thought process about the gender of a person or the background of a person is one of the things जिसके कारण आपको शायद जॉब से निकाल दिया जाए. होराइजन ब्रॉडन करने का अब ये समय है. एग्जाम्पल्स ऑफ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे आप अगर किसी एनजीओ से जुड़े हैं या अगर आप गूंज इज अ कंपनी और हेल्पेज इंडिया इज अ कंपनी, और इफ यू आर इनटू ट्री प्लांटेशन और ग्रीन ड्राइव्स, environmental sustainability, manufacturing processes will not close. But क्या आप पेड़ उगाते हो साथ में? Ethical supply chains. It is not a biased or a फायदेमंद वाली, हाँ चलो तू सप्लाई कर, मेरा इतना कमीशन दे, बाकी को छोड़ दे, वो उनकी प्रॉब्लम. नो, you are a part of my company. My company is your company. So till the time you will not contribute positively to me, you will not be truthful to me, तुम्हारा आगे जो उसका डोमिनोज इफेक्ट होगा वो भी ट्रूथफुल नहीं जाएगा. एकमत्यम, as the word says, one thought, one focus, collective leadership and consensus. Coming back to the friends group, I am looking at my time because I know I am closing into the same. Does it really happen कि चलो let's go? कहाँ? चल खाना खाने चलते हैं. कहाँ चलते हैं? अब कहाँ चलते हैं में अगर 3 ऑप्शंस आती हैं, वी कैन गो फॉर अ वड़ा पाव, लेट्स गो एंड ईट चाइनीज, नो मुझे पनीर और रोटी खानी है. कंसेंसस कैसे आता है अगर 5 लोग हैं तो मतलब कोई 1 या 2 लोग होंगे जो अपना उसमें से मत छोड़कर ग्रुप के साथ जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक जो वो पूरा ग्रुप है वो ये एक चीज जाकर खाना चाहता है. शायद बजट कंस्ट्रेन हो सकता है, शायद ज्यादा हो रहा है, मे बी मौसम ऐसा है दैट नो वी जस्ट वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट. Bring it into the organizations. The traditional Indian governance systems, what they say, they encourage collective decision and consensus based decision makings. आज भी बहुत जगह गांव में या रूरल अर्बन प्लेसेस पे पंचायतें हैं. आज भी पंचायतों का जो डिसीजन होता है वही डिसीजन बहुत सी फैमिलीज को रूल करता है. टीम कोलैबोरेशंस, ओपन डायलॉग्स विल लीड टू कलेक्टिव डिसीजंस. अगर एक टीम है जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रही, मतलब या तो टीम लीडर है जो सिर्फ रूल कर रहा है या टीम मेंबर्स को फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है. एक मध्यम या कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी. Managers need to have involved and also involve team members in strategic decisions to increase engagement and innovation. अगर आपका ऐसा रहेगा, अगर आप एक टीम को इकट्ठा लेकर आगे चलोगे, you will always foster unity and shared success. Success is not never an individual effort. There has to be people either in the background or with you who are responsible for that success in your life. So ek madhyam becomes very important, be it
you as a student, as a junior executive, as the class representative. क्लास रिप्रेजेंटेटिव होना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि तुम उस समय क्या हो, तुम कम्युनिकेशन चेन हो फैकल्टी, डायरेक्टर, मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में, जिनका मत एक जैसा होना बहुत कम होता है। बट हाँ, अगर कुछ करना है, हमें डीलिंग आती है, मैम हमें ये करके दो तो हम आपके लिए ये कर देंगे। दैट ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ एकमत्य मुंडी, क्योंकि हम अग्री कर रहे हैं, इवन इफ इट इज अ बार्टर, इवन इफ इट इज अ ट्रेड, काम तो हो रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो विद दिस I conclude the session saying that Indian knowledge system principles and management fundamentals, they provide value-based foundation for management. They emphasize on ethics, responsibility of an individual towards himself, his surroundings, his societies, his organization, social welfare and holistic well-being. जब यही चीजें वो एक मॉडर्न मैनेजमेंट में लेकर जाएंगे, they will create sustainable organizations, motivated employees, extrinsic as well as intrinsic motivation के साथ, and very good leaders. And they will make management not only efficient, ethically grounded, and socially meaningful. तब जब आपकी गुडविल बनती है, तब जब आपका ब्रांड बनता है, तब आप रतन टाटा बनते हैं। कि टाटा ग्रुप को कब पहचाना जाता है? जब नाम लिया जाता है रतन टाटा। और जब रतन टाटा के साथ एक नाम और जुड़ता है, शांतनु, जिसको रतन टाटा ने मेंटोर किया, वो दोस्त बने, तो वो एक दूसरी हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप बन जाती है। सो विद दैट आई कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग and giving me this opportunity. I leave the house open if you have any questions, please. कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, I would be happy to hear you. Aniket sir, Yes, ma'am. anything that anybody would like to say, ask? Completing my session writing time? Yes, ma'am. On time. Always, sir. Gee. Anyone? Chalo, let me just ask you one question before I leave. Do you agree with what I had said? या difference of opinion है? अगर तुम्हें लगता है कि सारे प्रिंसिपल्स में नहीं, या दो या तीन प्रिंसिपल्स में, yes, we have experienced this in our life also. अगर तुम्हें एक वैसी फीलिंग आई, give me a thumbs up. बिल्कुल भी नहीं आए, मतलब फिर तो सुना नहीं। No, I think they are much there, and thank you so much for the opportunity. You're most welcome to visit my campus as and when you'd like. I am here. You'd like to come and meet me in person, most welcome. And I wish you all the very best for your future, for your professional developments. Remember, learning will never stop. Even once you've done your MBA, there are different courses to do so that that can help you to move further in life. Never stop that. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Thorat sir, for being here. Thank you, ma'am. Can't hear you. I think you're mute. Most welcome, sir. Dear ma'am, on behalf of Matrix School of Management Studies, I would like to extend our sincere gratitude for your valuable contribution as a guest speaker on the topic IKS Principles in Management Fundamentals. Your session was highly insightful, engaging, and enriching for all our students. The session was exceptionally well structured, presenting the concept of IKS and their relevance to the modern management in a clear and meaningful way.
your explanation of traditional Indian management wisdom, ethical leadership, value-based decision making, and sustainable practice help students understand how ancient principles can be applied in today's business environment. Thank you once again for your valuable time, effort, and dedication. We look forward to the opportunity of collaborating with you again in the future, ma'am. Your contribution has Absolutely, sir. Looking forward to it. Thank you so much. Thank you, everyone, for being here. May I leave once the meeting, again, thank sir? you for the wonderful and enlightening the session. We sincerely appreciate your guidance and hope to welcome you again in the near future, ma'am. Thank you, sir, and hope to see you soon too. Yes, ma'am. Thank you. Sir, link button. Without giving feedback, don't let the session leave the session. Everyone, you have to give the feedback. फर्स्ट इयर मध्ये माझ्याकडे 4 सेकंड इयर माझे 16 आहे टोटल का सेकंड इयर 16 म्हणजे सेकंड इयर 11 आहे. 3 डिफॉल्ट धरले माइक नोट करा